Good evening, everyone. Warm welcome. My name is Madhav Sir. I welcome you all in the next session. We call it as Finance Current Affairs. So today we will be discussing 7th to 9th of December related current affairs, which are specifically finance related current affairs. And these current affairs are really very important if you are preparing for different regulatory bodies exam. Maybe if you are preparing for exams like SBI, IBPS, then also this session is a must-watch session for everyone. So before I start with the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can begin the discussion. Quickly एक बार जल्दी से comment section में बता दीजिए ताकि बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करें. And I'm pretty sure, as always, you are going to enjoy the discussion. अब पॉइंट ये है कि सर आज का जो हमारा सेशन उसमें हम क्या क्या न्यूज़ कवर करने वाले, कौन कौन सी चीज़ों पे डिस्कशन होगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एरियाज आज हम एक्सप्लोर करेंगे दे कैन बी आस्क्ड इन आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन. देन माय आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आज की जो न्यूज़ है इट विल इंक्लूड 3 इंपॉर्टेंट, या मैं ये कहूँ कि आज का जो सेशन है इट विल इंक्लूड 3 इंपॉर्टेंट एरियाज. द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट न्यूज़ वी हैव इज basic statistical return on credit. So RBI has presented its quarterly report, that is basic statistical return 1 on credit, and we have the second one that is basic statistical return 2 on deposit. तो भैया सेकेंड क्वार्टर या सितंबर 2025 तक क्या हालत है इंडियन बैंक के क्रेडिट सिस्टम की as well as deposit system की, we will be discussing that. And later on we'll discuss a very important news that RBI has consolidated its master direction. लगभग 9,445 मास्टर डायरेक्शंस सर्कुलर्स को कंक्लूड करके लगभग 250 प्लस 250 के अराउंड मास्टर डायरेक्शंस अब प्रेजेंट किए आरबीआई ने, which has made RBI रूल्स एंड रेगुलेशंस मोर कंसाइज एंड मोर रीडेबल फॉर्म. ठीक है जी. तो these are the areas which we are going to explore today. But before I start with the discussion, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, एवरीथिंग इज फाइन, सो दैट वी कैन बिगिन द डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले. क्विकली एवरीवन जल्दी से रिप्लाई कर दो कमेंट सेक्शन में. और अगर आप चाहते हैं इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. इस चैनल पर यू विल गेट द पीडीएफ जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन इटसेल्फ. पिछले सेशन की शायद पीडीएफ अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए मैंने आज के सेशन में पिछले सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पुट किए. तो अगली क्लास में वी विल बी हैविंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज सेशन एज वेल. ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया पॉइंट. आई होप वी आर गुड टू गो. स्टार्ट करें. ओके चलो, लेट्स बिगिन द डिस्कशन. सो द फर्स्ट न्यूज वी हैव इज क्वार्टरली बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न 1 ऑन क्रेडिट फॉर सितंबर 2025. जैसा कि आप जानते हैं, इफ यू आर ज्वाइनिंग माय सेशन from past few days, you must be aware of कि I directly do not jump on the news. Rather, first we discuss the basic aspect, the psyche of the news. We try to understand the terms which are mentioned in the news. So first point is, sir, ये basic statistical return है क्या? If I say basic statistical return, ये क्या है? Sir, it is a quarterly supervisory data collection mechanism through which Reserve Bank of India collects account level credit information फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स. तो जो आपकी कंट्री के शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें हम कौन कौन बैंक्स की बात करते हैं. सो वी टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वी टॉक अबाउट प्राइवेट बैंक्स, वी टॉक अबाउट फॉरेन बैंक्स. तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, RBI asks these scheduled commercial banks to present their data or to submit their data with RBI with respect to credit as well as deposit. कि भैया आपने कितना क्रेडिट दिया, कितना डिपॉजिट आपको रिसीव हुआ, what are the current outstanding deposits, what are the current outstanding credit. Every data is collected. और ये जो क्रेडिट रिपोर्ट है that is 1 और जो डिपॉजिट रिपोर्ट है that is 2, and it is presented on regular basis, it is presented on quarterly basis. ठीक है. अब इसमें हमें क्या क्या चीजें समझनी है, प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. लेट मी so that the things are clear to you. हाँ जी. So if I talk about the areas which you have to cover from this particular discussion, ये जो रिपोर्ट है ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज फर्स्ट वन, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज ऑफ द बोरोवर्स. मतलब हम ये जानना चाहते हैं
कि जो borrowers हैं, they are involved in what kind of business platforms, what kind of business formats, or what kind of occupation, so that can be understood. Secondly, we can even understand the organizational sector कि household या corporates क्या differentiation है, क्या difference है, क्या gap है in terms of credit. We also understand the population group, that what is the borrowing, what is the credit value for metropolitan areas, urban areas, semi-urban areas, or rural areas. Then we also try to understand the types of credit accounts, and most importantly, this data help RBI to find out weighted average lending rate. I hope ये weighted average lending rate term आपने पहले भी सुनी होगी, मैंने बहुत बार इस टर्म पे बात की है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ. Guys, let's suppose we are talking about a bank, ठीक है. Now this bank has given loan to different authorities. For example, this bank has given the loan to 5 different categories. One is residential loan, one we have as industrial loan, then we have as agriculture loan, we have car loan, we have personal loan. ठीक है. अब let's suppose the agriculture loan or the residential loan is of 200 rupees, industrial loan is of let's say 400 rupees, agriculture loan is of 300 rupees, car loan is of 100 rupees, and personal loan is of let's say 50 rupees. इन पे जो lending rate है, example ले रहा हूँ. So let's suppose the lending rate is 10% over here. Let's say it is 12%. Let's say it is 12%. It is 14%. And it is 16%. Now the question is, what is the weighted average lending rate? एक तो एवरेज होती है. एवरेज का मतलब क्या सर? 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 को डिवाइड कर दो 5 से, दैट इज एवरेज. बट हियर वी हैव टू टेक द वेटेज. वेटेज का मतलब टोटल लोन में 10% लोन पे कितना वैल्यू ऑफ फंड्स गया है, कितना वैल्यू ऑफ फंड्स हैव बीन गिवन ऑन क्रेडिट on 10% out of the total value, that is 200. 400 rupees is given on 11%. 300 rupees is given on 12%. 100 rupees is given on 14%, and 50 rupees is given on 16%. और इस सब को will divide with the total credit. Total credit कितना होगा? 2 plus 4 is 6. 6 plus 3 is 9. 9 plus 1 is 10. And इसको भी guys 100 ही कर लेते हैं. Otherwise जो हमारी calculations है, that will be tough. So it will be 1 plus 1, 2, 5 and 6. That is 1100. अब इसको add करेंगे, we'll get the answer. So the first one we have is 200 into 10, 2000% plus 44, 100% plus 36, 100% plus 1400% प्लस 1600%. ठीक है जी. अब मैंने क्या किया, ये जो दो जीरोस आपके पास आई हैं, आई विल बी रिमूविंग दीज टू जीरोस आउट ऑफ दिस 1100. तो मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी व्हाट? सो दैट विल बी 20% प्लस 44% प्लस 36% प्लस 14% प्लस 16% डिवाइडेड बाय 11. अब एक बार इसको डायरेक्टली अगर हम एड ऑन करके देखें, सो दिस विल गिव मी 20 प्लस 40 इज 60, 60 प्लस 30 is 90, 90 plus 10 is 100, 100 plus 10 is 110, 110, 120, 130. तो ये आ गया आपका 130% divided by 11. If you solve it, it will come out around 11% only. अगर मैं मोटी मोटी से बात करूं तो 111 around 11.8%. तो ये जो 11.8% है, this is basically the weighted average lending rate which can be calculated. और ये calculation तभी हो पाएगी if RBI has the data with respect to the credit lending which has been done by the banks. तो ये जो data sets हैं, it helps the RBI to analyze credit concentration, analyze the sectoral credit needs as well as regional credit inequality, which is very important. इसमें अगर मैं बात करूं scheduled commercial banks में, we all know that RRBs come under the category of scheduled commercial banks, but in this case, RRBs are excluded. In this case, RRBs are excluded. Second is data presented across states as well as across banks and population group. ये बहुत important चीज है कि सर जो आपको data मिलेगा, that data will be presented state-wise. I will be giving you the data state-wise. I will even share the data with respect to the population group, urban area, metro area or metropolitan area, semi-urban area, as well as will get the data with respect to bank group की private banks, public sector banks. तो इन तीन formats में you will get the data, and this data is with respect to the last date of the quarter, that is 30th September 2025.
तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट सपोर्ट्स द मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई कैन टेक द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन more appropriately if RBI is having the data, enables financial stability, helps government and regulatory to track credit to priority areas, help to understand the household leverage as well as assist RBI in calibrating counter cyclical buffers. तो RBI counter cyclical buffers कितने होने चाहिए, रिक्वायरमेंट है या नहीं, that can be calculated with the help of this, because credit to GDP gap ratio is basically the threshold used for counter cyclical capital buffer. तो उसके लिए important है. Secondly, it helps us to understand that whether the lending is appropriately done by the banks to the priority sector lending is done, or to the priority sector the lending is done or not. So all these basic criteria can be checked for sure with the help of this particular data. ठीक है जी. अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जो सितंबर 2025 का डेटा है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट ग्रोथ. इफ आई टॉक अबाउट क्रेडिट ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस, सो द क्रेडिट ग्रोथ हैज इंक्रीज टू 10.7%. Credit growth has increased to 10.7% in the month of September 2025, up from 9.9% in June 2025. So 9.9% was the credit growth in the quarter April to June. लेकिन अगर हम बात करें जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है दैट इज 10.7%. उसका एक रीजन है. द रीजन इज आरबीआई हैज डिक्रीज द रेपो रेट. क्रेडिट has become cheaper in the country, and automatically when the credit becomes cheaper it will be borrowed more. और अगर इसकी borrowing ज्यादा होगी, अगर इस credit की borrowing ज्यादा होगी तो ultimately इसका result क्या होगा? Sir, ultimately the result is quite obvious that it will result in increase in credit flow in the economy. ठीक है जी. अगला पॉइंट है सेक्टर वाइज डाइवर्जेंस इन द क्रेडिट ग्रोथ. Despite quarterly improvement, year-on-year growth was still below September 2024 levels. तो भैया अगर आपका क्वार्टर वाइज जो ग्रोथ है that is good, लेकिन if you talk about the year wise growth, so the year wise growth मतलब जो ग्रोथ September 2024 में था on yearly basis, that same growth has not been recorded in September 2025. अगला पॉइंट आता है lending rates and transmission trend. If I talk about the weighted average lending rate, it has declined. Obviously, the reason is quite obvious. Why it has declined? Sir, it has declined because of the repo rate cut which has been announced by RBI. तो RBI ने around 1.5% repo rate cut किया since February 2025, और अब recently दोबारा जाकर in December 2025 RBI has again cut down the repo rate, but till September the repo rate was cut by 1.5%, and it has to reflect, undoubtedly it has to reflect in the lending rates of the bank. So the weighted average lending rate has fallen down from 10.2% to 9.56%. Next is strong transmission to housing loans. If I talk about the housing loans, weighted average lending rate has declined by 92 basis point. We all know that RBI has asked the banks that they can decide their lending rates on the basis of one of the external lending rate, which can be repo rate, T91 treasury bills, or T182 treasury bills. But in case of home loan, most of the banks, as per the recommendation of RBI, they have linked their home loans with repo rate. अगर repo rate को cut down किया गया तो automatically its visibility in the home loan is going to be more prominent, and that is the reason 92 basis point. 92 basis point means 0.92% decrease of home loan has been recorded, and overall the loan lending rate has decreased by 0.64%. This has been recorded as per the latest data. अब बात आई बैंक वाइज डेटा की, then we'll talk about population group wise data, and then we'll talk about state wise data. अगर हम बैंक वाइज डेटा की बात करें, public sector banks they have improved their shares. Public sector bank share has increased to 53.9%. So out of the total credit, 53.9% share is with the public sector banks. On the other side, rest of the share is with the private sector bank as well as foreign banks. लेकिन इस पूरी कहानी में एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है that is 53.9%. Second category is, sir, out of the different categories of loans, बाकी loans का क्या हुआ, कैसे they have performed. So in case of personal loan growth remains above the average system.
So if I talk about what is the overall average credit growth, so we have just read the overall credit growth in the first quarter. The overall credit growth in the first quarter is 10.7%. It is 10.7%. लेकिन इस 10.7% एवरेज ग्रोथ के कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है दैट इज इन केस ऑफ पर्सनल लोन. That is in case of personal loan, and all the major personal loan categories, they have witnessed a slow, that is housing, vehicle, education, other personal loan, स्लो होने के बावजूद, लास्ट ईयर के मुकाबले स्लो होने के बावजूद आज भी जो ओवरऑल ग्रोथ है दैट इज मोर देन द एवरेज ग्रोथ. तो आपका पर्सनल लोन हैज ग्रोन फास्टेस्ट विद 12.5%. On the other side, if I talk about agriculture and industrial loan, growth dropped in case of agriculture loan from 13.2 to 10.4%, and in case of industrial credit, it has dropped down from 10.4 to 8.4%. So this point is important. This point is important. Now, why this drop has been recorded? So the drop is because of KCC renewals, crop losses, input cost pressures, as well as low rural sentiments in early 2025. Next, we have in case of industries, industry sector has witnessed downgrading of the capacity. Private capital expenditure has remained weak in 2025, because of which ना तो इंडस्ट्रीज ने ज्यादा लोन लिया, तो उनका इंडस्ट्रीज का जो लोन का या क्रेडिट का ग्रोथ है दैट वाज 10.4%. Industrial agriculture sector was 10.4%, average is 10.7%, and personal loan has witnessed the growth of credit that is 12.5%. Clear हुई ये बात? Next is what is the share of loan or what is the share of total loan by the household sector. तो household sector की अगर हम बात करें तो household sector का जो total loan में share है that is 58.5%, which means the household sector now accounts for the majority of scheduled commercial bank credit. Strong growth within the household sub segments, जैसे कि अगर हम individuals की बात करें, individual has witnessed a growth of 12.3%, and other household entities they have also witnessed a growth of 14.9%. तो अगला पॉइंट यहाँ पे ये बनेगा कि अगर आप हाउसहोल्ड सेक्टर की बात करें तो हाउसहोल्ड सेक्टर रिकॉर्ड्स 58.5% ऑफ टोटल क्रेडिट given by scheduled commercial bank. On the other side, public sector banks की अगर हम बात करें तो सर public sector banks they record for 53.9% of the total credit. मतलब जितना टोटल लोन दिया गया by private banks, public sector banks and foreign banks, उसमें से 53.9% का जो लोन है that is given by alone public sector bank category. अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, हेल्दी बट मॉडरेट ग्रोथ. तो जो आपका प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है it has witnessed a growth of 9%, which has improved, but the total share is 25% out of the total credit, but household share is 58.5%, which is something which you need to remember. Okay. Last but not the least is some of the important points which you need to remember. Credit growth कितना हुआ सर? 10.7%. Weighted average lending rate has fallen down from 10.2 to 9.56%, which means there is a drop of 0.64%. But on the other side, in case of home loan, we have witnessed the highest drop of 0.92% or 92 basis point. Public sector bank ka share 53.9%, personal loan growth 12.5%, agriculture loan 10.4%, industrial growth 8.4%, household sector 58.5%, private corporate credit shares 25%, and private corporate growth is 9%. This is the entire data from BSR1 which you need to remember. आइए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. The question says, consider the following statement regarding the quarterly basic statistical return on credit as per September 2025. Bank credit growth has improved to 10.7% in the month of September. This is correct. In the month of September, this is correct. Moving on to the next, the weighted average lending rate on the outstanding credit has decreased. It's not increased, guys. It is decreased by 0.64%. So this is wrong. Private sector bank has recorded higher credit growth than public sector banks throughout 2024-25. अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है, इज इट ग्रेटर देन दैट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स? नो सर, it is not greater than that of public sector banks. So this is
Wrong. This is wrong. This is wrong. Moving on to the next point. Private sector bank recorded higher credit growth than public sector banks throughout 2024-25. इस पॉइंट को मैं आपको बता दूं, इसमें एक कंफ्यूजन है ताकि आपको गलती ना हो, ध्यान से देखना. प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है दैट इज मोर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बट द शेयर ऑफ टोटल क्रेडिट इज मोर विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, सर ग्रोथ इज 10.7%, दिस इज करेक्ट. लेकिन लास्ट टाइम जो ग्रोथ थी दैट वाज 9.9% इन द मंथ ऑफ जून 2025. इज इज ऑल्सो करेक्ट. तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, सही हो गई. सो आपकी जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है दैट हैज इंप्रूव्ड टू 10.7%. दिस इज करेक्ट. लेकिन यहां पे जो टर्म बैंक है दैट शुड नॉट बी टेकन अप करेक्टली. दैट शुड नॉट बी टेकन अप करेक्टली, क्योंकि यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ओनली. तो यहां पे अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक लिखा होता देन आई वुड हैव गॉन विद दिस स्टेटमेंट करेक्टली. लेकिन अभी आई विल नॉट गो विद इट. हालांकि जो डेटा है दैट इज करेक्ट. हालांकि जो डेटा है दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज पर्सनल लोन हैज ग्रू बाय 12.5% इन सितंबर, हायर देन द ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ. पर्सनल लोन जो है दैट हैज ग्रोन बाय 12.5%. दैट हैज ग्रोन बाय 12.5%. 12.5%, which is above the overall credit growth. This is also correct. This point is also correct. The share of the household sector in the total credit declined marginally to 58.5%. Declined marginally? नहीं sir. It has improved marginally. Last time it was 57.4, उससे बढ़कर 58.5 हुआ. This is wrong. Private sector bank recorded higher credit growth than public sector banks throughout 2024-25. एक बार इस पॉइंट को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं. अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि सर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो ग्रोथ है इट कॉन्टिन्यूज टू ट्रेल पब्लिक सेक्टर बैंक्स. कॉन्टिन्यूज टू ट्रेल पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब प्राइवेट बैंक्स पीछे इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ट्रेलिंग. दे आर फॉलोइंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो द ओनली स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट इज द फोर्थ स्टेटमेंट. रेस्ट ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. तो इसका आंसर क्या बनेगा? सो फोर्थ स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर सो दैट वी कैन मूव अहेड. अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन को. इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकती है. सो यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यू हैव टू गिव मी द आंसर. सो चेक इट आउट एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. गॉट इट? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट गिव मी यस सर so that I can move ahead. Guys, if you have taken the screenshot give me yes sir so that I can move ahead. Done? Okay. Now let's move on to the next news. So the next news is quarterly basic statistical return to ऑन डिपॉजिट्स. अब हम बात करेंगे कि बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है उनकी क्या हालत है. तो इसमें भी अगर हम बात करें ये जो BSR सिस्टम है ये एक लॉन्ग फीचर है विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI बैक इन 1970, जहां पे RBI कलेक्ट्स ब्रांच लेवल डेटा फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अगेन एक्सक्लूडिंग RRBs, which enable RBI to monitor the structural trends in the deposits, credit, employment and financial deepening. इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स किए जाते हैं? सर द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, सेक्टोरल ओनरशिप, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मैच्योरिटी पैटर्न, साइज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट रेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच ब्रांच, मॉनेटरी पॉलिसी एनालिसिस, बैंकिंग पेनिट्रेशन, डिपॉजिट प्राइसिंग, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है. अब ये सारा डेटा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से जो मेजर डेटा इंपॉर्टेंट है आई विल बी डिस्कसिंग दैट डेटा एज वेल. So September 2025 release as well as it reflects the last day of the quarter and it includes the effect of non-bank merger into bank
फ्रॉम 1st जुलाई 2023. तो फ्रॉम 1st जुलाई 2023 में वी आर इंक्लूडिंग द इफेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ अ नॉन बैंक मर्जर इनटू अ बैंक. एनी आइडिया गाइस? इसका मतलब पता है किसी को? ये स्टेटमेंट काफी जगह आरबीआई के सर्कुलर्स में, आरबीआई के रिपोर्ट्स में मेंशन की जाती है. डू यू हैव एनी आइडिया कि व्हाट इट एक्चुअली मींस? इसमें जो एग्जामिनर है, what the writer is actually trying to say while writing this particular statement? किसी को कोई आइडिया हो? Anybody, any idea? Give me yes if you have it. If no, just type N. Just type N. नहीं, ठीक है, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है. इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ अ नॉन बैंक मर्जर इनटू बैंक. इस लाइन का मतलब है अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटी. अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटी जैसे कि एनबीएफसी है, या फिर कोई हाउसिंग कंपनी है, या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, was merged into a bank and merger was officially, I would say the merger officially became effective on 1st July 2023. So because of this merger, the financial numbers, the ratios or data shown in the chart, table or report include the impact of this merger starting from the date. तो यहां पे ये कहा गया a non-banking entity merged into bank फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2023. तो उसका जो इंपैक्ट हुआ है बैंकिंग स्टेटमेंट्स में, बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट इंपैक्ट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड. इज इट क्लियर? सो वी आर इंक्लूडिंग द इंपैक्ट ऑफ एनबीएफसी और we are including the impact of NBFC, or we can say housing finance company or any other financial institution on the bank once the merger was done and it was effective from 1st of July 2023. अब यहां पे क्या क्या चीजें हमें समझनी है. सबसे पहला पॉइंट, ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ. सो डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, सो डिपॉजिट हैज ग्रोन बाय 9.9% ऑन ईयर बेसिस, व्हिच इज लोअर देन the last year growth, which was 11.7%. Why? So because of higher consumption expenditure due to fall in inflation rates of the country, increased attractiveness of small savings and market instruments. So we are looking forward to invest more in market, more in shares rather than in banks. Modernization and liquidity post pandemic, as well as higher credit growth outpacing deposit mobilization for some banks. तो कुछ banks में जो आपका credit growth है that was higher than the deposit growth as well. अगले पॉइंट पे बढ़े. पॉपुलेशन ग्रुप की अगर हम बात करें, as per the census 2011, rural area means population is up to 10,000, semi-urban 10,000 to 1 lakh, urban 1 lakh to 10 lakh, and metropolitan greater than 10 lakhs. So growth highlights, metropolitan branches, they have grown. Metropolitan branches, they have witnessed a growth of 9.6%, rural branches 11.7%, semi-urban branches 10.7%, and lowest growth has been witnessed in urban branches of 9.5%. तो अगर आप देखें, rural और semi-urban branches, they have shown strong deposit growth, which indicate deeper financial inclusion, improving rural income as well as effectiveness of business correspondence in the country. Next point is, तो अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है वो कहां हुई है, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें जो क्रेडिट ग्रोथ है, इफ आई mark it out in a decreasing order, rural branches, they have witnessed the highest deposit growth, then semi-urban branches on the second rank, metropolitan branches on the third rank, and on the lowest we have the urban branches. If you can remember the percentage, please do it. If you can't, it's okay. Just remember the flow. That is more than sufficient. On the other side, if I talk about the public sector banks, so the public sector banks has witnessed a deposit growth of 9.6%, but out of the total deposit, public sector bank is holding 57.3% of the deposit. Out of the total lending, public sector bank is holding 53.9% of credit. तो total credit का 53.9% credit is given by public sector bank, और total deposit का 57.3% credit is
sorry, total deposit ka 57.3% of deposit is with the public sector banks. Despite growth 10%, sharply lower than 15.1%. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, the growth of deposit in the private sector bank was more than the public sector bank, but still it is lower than the growth in comparison to the previous year data, which was 15.1%. Now, if I talk about the composition of deposit, sir, in terms of composition of deposit, term deposit is leading the growth. So highest growth has been recorded with term deposit, that is FD, fixed deposit, and RD, that is recurring deposit. On the second rank, we have current deposit, that is current account, and on the third rank in terms of growth we have is savings account. तो सबसे slow जो grow हुआ that is savings account because of low interest. सबसे ज़्यादा जो grow हुआ that is term deposit because of high interest, and current account increase हुआ because it is not open for earning the rate of interest. These accounts are basically opened by the business organization for managing their business transactions. अगर हम maturity profile की बात करें of term deposit, so maturity profile has shifted towards 1 to 3 year bucket. 69.8%, approximately 70% जो total deposit है बैंक के पास, total term deposit है बैंक के पास, it is going to mature, or it has a maturity of 1 to 3 years. It has a maturity of 1 to 3 years, 20% with a maturity of up to 1 year, and left out 10% around with maturity greater than 3 years. Second point is interest rate structure. There is an increase in deposit below 7%. So 46% of the term deposit carry interest less than 7%, and it is a sharp increase from 13.1% year ago. So अगर हम पिछले साल बात करें तो पिछले साल लगभग 31.2% of the term deposit was witnessing a interest below 7%, but now we have 46% of the total deposit, or 46% of the total term deposit carry interest rate up to 7%. Reason is again the same. रेपो रेट कम हुआ, बैंक के लेंडिंग रेट्स कट हुए, तो बैंक ने अपने डिपॉजिट रेट्स को कट किया. अब वो लोन या वो डिपॉजिट अकाउंट्स जिन पे इंटरेस्ट रेट 7% से कम है, पहले वो 31% था टोटल का, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 46%. नाउ इट हैज इंक्रीज टू 46%. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगला पॉइंट क्या कहता है? अगर हम डिपॉजिट साइज की बात करें, लार्ज डिपॉजिट with deposit value greater than 1 crore. So deposit value greater than 1 crore, its growth is 12.3%, and their share has increased slightly to 45.6%. तो उनका जो share है, it has increased slightly from 45.3% to 45.6%, and if I talk about the growth, it is 12.3%. Household sector की बात करें तो around 60% of the total loan as well as around 60% of the total deposit is holded by the household sector only in the country. Senior citizens का जो share है in the deposit, that is 20.6%. So this data is again important. Geographic concentration की बात करें तो top 6 contributors जो है हमारे states के term में महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु, West Bengal, these account for 54.2% of the household deposit, and Maharashtra alone accounts for 16.5% of the total household deposit. अब आपको याद क्या रखना है? सर डिपॉजिट ग्रो हुआ है 9.9%, पिछली बार था 11.7%. रूरल एंड अर्बन एरियाज में जो ग्रोथ है दैट वाज स्ट्रांग इन कंपैरिजन टू मेट्रोपॉलिटन एंड अर्बन एरियाज. पब्लिक सेक्टर बैंक मार्केट शेयर इज 57.6%. Private sector bank growth has slowed down, but again more than public sector bank. Term deposit lead growth. Term deposit lead growth, where term deposit has witnessed a growth of 11.6%, और सबसे कम growth हुई है saving account की, which is only 6.7%. 69.8% of the total deposit are going to mature in 1 to 3 years, and the share of deposit with interest less than 7% has jumped to 46%. If I talk about the large deposit, it has witnessed a growth of 12.3%. Household hold 60% of the total deposit, and female hold 34.5% of the total household deposit. Senior citizens hold 20.6% of the total household deposit, and Maharashtra leads in the household deposit with 16.5%. ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये डेटा आपको याद करना फॉर द क्रेडिट पार्ट. तो क्रेडिट और डिपॉजिट में नाउ विल मूव ऑन टू द डिपॉजिट क्वेश्चन. ओवरऑल
deposit with the scheduled bank, with the scheduled commercial bank has witnessed a growth by 11.7%. या ओवरऑल ग्रोथ 11.7% है? नहीं सर, ओवरऑल ग्रोथ 11.7% तो नहीं है. वी हैव जस्ट रेड द डेटा. व्हाट इज द ग्रोथ? सो द ग्रोथ वैल्यू इज 9.9%. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Rural and semi-urban branches, they have recorded higher deposit growth than metropolitan and urban branches. This is correct. Public sector banks has improved their share of deposit in September 2025 compared to the previous quarter. Public sector banks का जो share है वो improve हुआ है. पहले वो 57.3% था. Now the share has improved to 57.6%. The share of term deposit carrying interest less than 7% has increased from 31.2% to 46%. Yes, sir, it has significantly increased. Large deposit size 1 crore. They accounted for more than 45% of the total term deposit. तो total term deposit में से 45% का जो deposit है that is of value more than 1 crore. This is correct. तो इसके basis पे if I say what is going to be the correct answer? So the correct answer is going to be 2, 3, 4, 5, which means B option is absolutely the correct answer. B option is absolutely the correct answer. ठीक है जी, clear हो गया point? If you have any doubt till this point, you may ask please. Otherwise, I'll showcase you the next question, which is again going to be your homework. The fourth question of the evening is now on your screen. Take the screenshot and do let me know अगर कोई doubt है तो पूछ लीजिए. Otherwise, we will be moving on to the third news of the day. Otherwise, we'll move on to the third and the final news of the day. Done, guys? Taken the screenshot? Chal. If you have taken the screenshot, now let's move on to the next news. The next news is RBI has consolidated the master directions. Comprehensive notes have been created for this. What I'm trying to say in this particular discussion, we all know that the RBI is responsible for regulation and supervision, and it has the power of regulation and supervision as per RBI Act, as per Banking Regulation Act, as per Payment and Settlement System Act, as per Credit Information Companies Act and many more. तो अगर हम बात करें since 1940s, thousands of circulars, notifications, guidelines, directions have been published by RBI. अब उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मान लो मुझे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की करंट लिमिट्स चेक करनी है एंड मैं गूगल पे लिखता हूं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट और साथ में लिख देता हूं RBI. तो इट गिव्स मी अ लिंक एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द लिंक, तो मैं वो लिंक को जब ओपन करता हूं देन आई सी कि ये जो नोटिफिकेशन थी या ये जो डेटा है जो मेरे साथ शेयर किया गया दैट वाज ऑफ 2021, मे बी 1989, मे बी 1993. इसका मतलब ये सारे के सारे जो आउटडेटेड डेटास थे, जो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन थी दैट वाज स्टिल अवेलेबल ऑन दी आरबीआई वेबसाइट, जिसका कोई यूज, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आरबीआई ने अब क्या कहा? आरबीआई ने कहा कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे बैंक्स हैं या फॉर दैट मैटर जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, दे आर गेटिंग डिस्टर्ब विद दिस इशू. स्पेशली स्टूडेंट्स लाइक यू एंड मी, वी आर ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब. जब हमें कोई डेटा पढ़ना होता है, हमें कोई कंटेंट निकालना होता है, निकालना मुश्किल हो जाता है आरबीआई की वेबसाइट से. तो आरबीआई ने अब इसे रिजॉल्व किया और आरबीआई ने क्या कहा कि ये जो कंप्लायंस बर्डन है इसे कम करते हैं और इसे फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन की गई. सो द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आरबीआई सर्कुलर्स हैव बीन डन. नीड क्या थी सर? ये जो रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी थी, कंप्लायंस बर्डन थे, इनकंसिस्टेंसी थी और सुपरवाइजरी डिफिकल्टी थी, इन सब को रिजॉल्व करने के लिए नाउ वी हैव कम अप विद वन सिंगल सोर्स फॉर ईच रेगुलेटरी टॉपिक. इसका मतलब अगर आपको कमर्शियल बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी नॉर्म के बारे में पढ़ना, यू विल लैंड अप टू वन लिंक. उस लिंक में आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग लिंक्स होंगे स्पेसिफिक, एंड यू विल हैव अ मास्टर डायरेक्शन जिसमें कमर्शियल बैंक से रिलेटेड सारे रूल्स को एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर समझाया जाएगा. अब यहां पे आरबीआई ने किया क्या सर? आरबीआई हैज कैरिड आउट मैसिव इंटरनल क्लीन अप एंड कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन. रिव्यू किया गया मोर देन 9000 सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस को. उसमें आइडेंटिफाई किया गया कि वो सर्कुलर्स को मेंटेन करो विच आर स्टिल रिलेवेंट.
फिर एक कैटेगरी बनाओ आउटडेटेड सर्कुलर्स, एक कैटेगरी बनाओ ओवरलैपिंग सर्कुलर्स, एक कैटेगरी बनाओ ऑब्सोलीट सर्कुलर्स। मान लो आपने एक सर्कुलर बनाया फॉर एक्स एंटिटी, कैटेगरी है, एक एक्स एंटिटी कैटेगरी है, अब वो कैटेगरी खत्म होगी। मान लो आपने एक रूल बनाए थे फॉर आईडीबीआई विच वाज अ डेवलपमेंट बैंक एंड टुडे आईडीबीआई इज नो मोर अ डेवलपमेंट बैंक, तो उसके लिए बनाया गया जो रेगुलेशन है दैट इज ऑफ नो यूज, सो दैट इज ऑब्सोलीट। एज वेल एज फिफ्थ कैटेगरी बनाओ दैट विल बी रिक्वायरिंग कंसोलिडेशन। तो पहले which are relevant, which are outdated, which are overlapping, which are obsolete and which require consolidation। इस बेसिस पे 5 कैटेगराइजेशन की गई और उन 5 कैटेगराइजेशन के बेसिस पे 35 सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड डायरेक्शंस को दे हैव बीन नाउ कंसोलिडेटेड इनटू 238। तो 3500 सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, डायरेक्शंस को कंसोलिडेट करके 238 डायरेक्शंस बनाई गई एंड नाउ दीज डायरेक्शंस हैव बीन क्लासिफाइड फॉर 11 रेगुलेटेड एंटिटीज, जिसमें हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एनबीएफसीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज वेल एज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, इन सब को रखा गया। अब ये जो 238 मास्टर डायरेक्शंस है, इसके लिए आरबीआई ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था ऑन इट्स वेबसाइट और उसके ऊपर 770 कमेंट्स मिले, 770 फीडबैक्स मिली बाय द बैंक्स, एनबीएफसीज, इंडस्ट्रियल बॉडीज एंड व्हाट नॉट। और उन सब फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए, उन सब फीडबैक्स को इंप्लीमेंट करते हुए आरबीआई हैज डन दिस कंसोलिडेशन। So many comments they required regulatory changes, but RBI did not incorporate those because the purpose of this exercise is pure consolidation। बहुत सारे कमेंट में ये कहा गया कि सर रेगुलेशन ही चेंज कर दो, आरबीआई ने उसे नहीं एंटरटेन किया, आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन वाले पॉइंट को इंक्लूड किया, नॉट पॉलिसी रिवीजन। हाउएवर द कमेंट्स रिलेटेड टू एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, अलाइनमेंट अक्रॉस द सर्कुलर्स वर इनकॉर्पोरेटेड। तो आज की डेट में जो हमारे पास 238 मास्टर डायरेक्शंस है आरबीआई की, these are fully consolidated, they are categorized function wise and they are even categorized entity wise। इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ थीम, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कस्टमर सर्विस, लाइसेंसिंग, फ्रॉड रिपोर्टिंग, लिक्विडिटी नॉर्म्स, डिजिटल लेंडिंग, आउटसोर्सिंग, क्रेडिट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन एंड एक्सपोजर नॉर्म्स। तो इन बेसिस पे these regulatory or master directions they have been recorded on the basis of the given themes। List of 9,445 circulars they have been withdrawn or repealed out of 9,000 plus reviewed instructions। About 9,445 legacy circulars are declared either obsolete, कि भैया अब इनका कोई मतलब नहीं है, they are removed from the website and they have been marked as withdrawn because RBI is looking forward for cleanup to around 9,445 circulars को हटाया गया, which is good for you and me। What will be the impact? Sir, it will reduce the compliance burden. Now you have one-stop access to all the master directions. You have higher regulatory clarity, easy for new entrants, better supervisory alignment and it will strengthen the ease of doing business in the country। अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं, this exercise is supporting the current scenarios because it aligns RBI Vision 2025 of principle-based technology-enabled regulation। It supports India's G20 commitment for regulatory transparency। It is also a part of broader initiative of simplifying the regulatory environment and it complements the other major reforms like digital lending guidelines, scale-based regulations for NBFCs, revised securitization norms, KYC, DPI। तो इन सब को भी ये इनिशिएटिव क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। Why this is important for you and me? Why it is important? Then I would clearly say that कि सर ये अब हॉट टॉपिक बन गया है और अगर हॉट टॉपिक बना है तो ऑब्वियसली इट कैन बी आस्क्ड इन योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पेपर, इट कैन इवन आस्क्ड इन योर ESI इन द टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इंटरव्यू में पक्का क्वेश्चन आ सकता है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी कंसोलिडेशन बाय आरबीआई और एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू मास्टर डायरेक्शन इन इंप्रूविंग द रेगुलेटरी efficiency। So the conclusion is now we have 238 consolidated master directions
which have been created by consolidating 3,500 circulars notifications, and 9,445 circulars have been removed from the website because they were obsolete, they were of no use, they have been replaced by the new master directions. I have a question for you. Let's try to solve it out. Consider the following statement. RBI consolidated 3,500 direction circulars to 238 master directions. बिल्कुल सही है. The consolidation exercise cover all the departments of RBI, including the Department of Supervision, as well as it includes the Department of Consumer Education and Protection. यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो कंसोलिडेशन इट ओनली कवर्स द डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, नॉट बाय एनी अदर डिपार्टमेंट. तो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को इंक्लूड किया गया और किसी को नहीं. एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 9,445 circulars were identified for repeal or withdrawal. That is correct. Master direction have been issued separately for 11 categories for the regulated entities. That is also correct. The consolidation exercise also included instructions issued by NABARD to RRBs and cooperative banks. Yes. तो आंसर क्या बनेगा सर? 1, 3, 4, 5 are correct, but the second statement is wrong. Now get ready, guys. I have a question for you, the sixth question, which you are going to take the screenshot and you will be giving me the answers in the next session. Take the screenshot, everyone. Give me the answer in the next session. Done? Okay. So that will be all from my side, guys. Go and take the join the Telegram channel in order to download the PDF. I will be sharing the PDF of this session right away after completing this session itself. But before I proceed, आज भी I'm getting n number of messages from different students that sir we are preparing for regulatory bodies exams, और या कुछ ऐसे questions आते हैं कि sir I want to prepare for regulatory bodies exam, लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करूँ. और फिर कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि सर इज इट गुड to rely on only one examination, that is RBI Grade B, or should I prepare for different regulatory bodies exam? Then my answer to this particular question is, guys, I would suggest you that you should prepare different regulatory bodies exams simultaneously, because relying on one examination will not help you. अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या different एग्जाम्स को प्रिपेयर करना पॉसिबल है? देन माई आंसर इज यस, पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? पहला रीजन ये है कि जो अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ all the regulatory bodies exam is not 100% same, but it is interrelated. For example, SEBI और PFRDA का सिलेबस इंटररिलेटेड है, PFRD IFSCA का सिलेबस इंटररिलेटेड है, और काफ़ी चीज़ों में अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ों में वी हैव रिकॉर्डेड अ सिनेरियो की नाबार्ड और RBI का सिलेबस सिमिलर है, बिकॉज ESI कॉमन है दोनों एग्जाम्स में. इसी तरह से ये जो कॉमन एरियाज हैं इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद इन कॉमन एरियाज को यू हैव टू इम्प्लीमेंट फॉर योर डे टू डे प्रिपरेशन. अब जब आप डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करने के बारे में सोचते हैं तो अगली जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है वो ये कि सर डिफरेंट एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए आई हैव टू गो एंड बाय डिफरेंट कोर्सेज विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. ऑब्वियसली कि एक तो सर सारे कोर्सेज को परचेज करना, फिर सारे कोर्सेज को डिफरेंटली पढ़ना, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में, इम्प्लीमेंटेशन में भी एज वेल एज एग्जीक्यूशन में भी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो, है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो. तो इसका एक सॉल्यूशन है स्पेशली विद टेस्टबुक प्लेटफॉर्म. एंड व्हाट इज दैट सॉल्यूशन आई हैव फॉर यू ऑल इज, गाइज वो सॉल्यूशन ये है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज रादर देन परचेजिंग द कोर्सेज for different exams differently, I would suggest you that you should go with a common subscription, and that subscription is available on our platform. And the best part is today this subscription is available at very low price of 8299. Use code MADHAV in order to subscribe to our super pack
for next 6 months, and you can prepare for IRDAI, RBI and the other upcoming examination under a single roof. But if you are preparing only for SEBI, then you can use the code MADHAV in order to join this subscription for 16 months at just 7499. और अगर सिर्फ आपको RBI के लिए prepare करना, use the code MADHAV and just subscribe to our RBI Grade B subscription plan for 16 months. Again, the code is same, that is MADHAV. ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा. हाँ, एक क्वेश्चन अब there is a question on the screen and the question says कि सर 244 है या 238 है. तो as per my information, I'll just cross check it. It is 238. If I have given you the term 244, I'm sorry for that. अगर मैंने गलत बोल दिया तो I'm sorry for that. But I think it is written on the notes 238 only, and I have double checked it. It is 238 only. ठीक है जी, क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड. विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन टू गो. बाय बाय, टेक केयर. Don't forget to use the code MADHAV while subscribing to any course or any material which is available on the Testbook platform, so that you can join the course or subscription or the test series at lowest price. So the code is MADHAV. Good luck. Bye bye.